Welcome back to our channel. I am now in Langvoku Waterfall. Let's explore this place together. लंगवाकू वाटरफॉल ये कार्बी अंगलोंग के मांझे एरिया के पास है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मेरा बेटा बहुत ही एक्साइटेड है। उसको ऐसे भी हाइकिंग बहुत पसंद है। बट वी शुड बी वेरी केयरफुल। बच्चों की सेफ्टी हमारा मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। Abu, come here. बच्चों को नेचर के साथ कनेक्ट होने का मौका देना चाहिए। हर बच्चा नेचुरली इंक्विजिटिव रहता है एंड दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर व्हाट दे रेड इन बुक्स इन रियल। Abu, watch out, your leg may slip. Please move slowly and carefully. Rest for Abu and enjoy the view. Mommy, don't worry, I will be careful. If you feel balanced, then only jump. We should let the children to explore, but it's very important to keep an extra close eye on them. Abu, stay focused on what you are doing and be very careful. ऐसे रास्ते में मेक श्योर कि घबराए नहीं, एकदम काम शांत रहे, प्रे करो, एवरी स्टेप में गॉड को रिमेंबर करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शिता सहला। O the creator of this universe, there is nothing easy except what you make easy, and you make the difficult become easy if you so will. Alhamdulillah. Albert Einstein ने कहा, look deep into nature and then you will understand everything better. नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं by just observing it closely. काश हम बच्चों के स्क्रीन टाइम को ग्रीन टाइम में बदल सकते। Let the children experience the real essence of life by letting them to spend time in nature. We are meant to explore and experience the real world, and the real world is in the lap of nature.